Dear students, this is really a great honor for all of us to have one of the greatest legal minds of our country with us today. Uh, Human dignity is very central to all human rights and even to the constitutions in the world and in Pakistan. Sir, thank you very much for joining us today. We are really pleased and honored to have you with us. And we have been working in our research center, and we are very much concerned with the human rights, which is very fundamental. And in Pakistan, upholding human rights have been a great challenge. When we look into the world, we see that the constitution of uh, Germany, or German constitution, the first article is about human dignity. When we read or go to the Universal Declaration of Human Rights, even the first article is about human dignity. And when we come home here in Pakistan and we see that our constitution and definitely in Islam, this is very central. And we want to know how this concept of dignity has shaped our everyday life, how it has shaped the constitution of Pakistan, and how it has even shaped our legal jurisprudence in Pakistan. So we would be very happy if you could share on it. Thank you. You would have noticed that each fundamental right, by and large, is either qualified subject to law, that such a right can be exercised subject to law, or if you look at it more carefully in certain other articles, say right to property. It is a whole bunch of riders and provisos are added that this right does not apply to housing, to so on and so forth. But the framers of our constitution, when they came to Article 14, which is dignity of man, I prefer the choice of words in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, which is dignity of human beings, not of man. It's first man, women, and transgenders. Coming back to 14, and sub-article 1, it starts dignity of man and subject to law, the privacy of the law. So there is a pointed desire and expression by the founding fathers of our constitution that the dignity of man is unqualified. There's no compromise, there's no riders, there's no provisos, there's no ifs, and there are no buts. So that I think is a critical thing. The concept has of dignity of man. The question would raise, what is the dignity of man? It is subjectively, it is my feeling and your feeling of self-respect, and existence. It is, for the other, is that the minimum requirement that qualifies me as a human being, that qualifies you as a human being. That status was always lurking here and there. Most of our concepts that we have with us today come from the common law tradition, which is either from Britain, by and large from Britain, and from the United States. And you would have Magna Carta and so on and so forth. It's Italy, a civil law country by a person called Pico, if I recall correctly. So it is one of the exports, besides pizza, from Italy. This was in the 15th century and the beginning of the Renaissance, after the dignity of man had been trodden during the Dark Ages in Europe. If you want to look at it from the Orient, I use that Orient as a counterpoint to the West. I think the most obvious answer is dignity of man is an attribute of being the vice-regent God on earth.
I don't have to tell you where I am quoting from. Khalifatul Arzika. You can't say. Because you are the vice regent, you are not the person sitting in Sarama or PD. That is your attribute. You can't be deprived of that status. Or we are all deprived of status all the time. So it is that concept. The, another way of looking at the whole thing is that if it is about lawyers to be or have been, as the case may be, it is one of the most underinterpreted provision of fundamental rights. Usually it is, if you look at the case of, by and large, it is used as a moreover, as an appendage to other rights. It's like a shoe being fitted to every foot. It loses its shape. I believe that not enough interpretation has happened of 14 sub-article 1 independently. This actually comes into play when the other rights end. And that's its critical aspect. I'll give you a very simple example. No man shall be deprived of life and liberty except in accordance with law. You are deprived of your liberty because you have tried and punished by due process for a crime. You have lost your liberty for the time being. So your liberty goes, but your dignity does not be compromised. So you're sent to prison. But there your dignity must still be protected, as the dignity of man must be protected. In prison, we have the Pakistan prison rules, which are usually with the jail manual by the British. And if you read that, it's a book. For prisoners, it says food has to be given to them. It says how much food, even the weight of the roti is given, how much meat they can eat in a week. And what is most important is how much space per prisoner in a jail. Because that physical space is what shows the dignity also. Is violated left, right, and center with all the prisoners are overcrowded. Where is Article 14? I'll give you a more crude example, but a more relevant one. A prisoner is entitled to be able to go to use the toilet, to use the shower or whichever to clean himself, and to use the toilet. If you can't do that, or if you does not have privacy while doing that, or if you put a camera on top, what does that mean? It affects and offends the dignity. Imagine yourself in that place. It offends against the dignity. That is a violation of Article 14, so Article 1, dignity of man. Now, another, the most crucial of all fundamental rights is the right to life. But Pakistan, we have a death sentence for certain crimes. Without debating whether the death sentence should or should not be given in what circumstances. Even after death, the dignity of man does not cease because he is entitled, his dead body is entitled to respect and burial in accordance with his religion and rights and rituals. Of course, we have a long history of this world of desecration of dead bodies. And not too long ago, I'm not talking about the Mongols who built pyramids of the heads of this, the vanquished, but in the 20th century. As I mentioned, that the dignity of man as a concept is missing. But if you even put on Netflix and look at a war movie, you'll die. Mussolini, the fascist dictator, was overthrown and executed along with his mistress, Benito Mussolini at Carrara Patacci. That's war. And then they hung their bodies upside down in the city square. That's dignity. You may be a criminal. That's violation of dignity of man. Then I remember, for example, there was a King Faisal, not of Saudi Arabia, earlier, of Iraq.
He was overthrown in a coup by Colonel Qasim, and Faisal's body was dragged to the streets of Baghdad, tied behind a jeep. That where is the dignity? That is the violation of dignity what that was. Of course, history plays tricks. Few years later, Qasim was overthrown in a coup, and his body was dragged to the streets of Baghdad. Where is the dignity of man? This is the violation of dignity of man, which can be dealt with, enforced without relevance to any other fundamental rights. But in fact, as I said earlier, it starts where the other fundamental rights end. But wherever you talk about dignity of man, or dignity of human being, you miss out the most critical part of it, the most obvious part of it. The economic relationship in a society, the disparity of wealth, the absence of social and economic justice in itself deprives millions of people of dignity. According to the IMF report, which came out a few months ago, or 1 month ago, 40% of the population of Pakistan lives below the poverty line. That's 100 million people. It also said in the last 1 year, 15 million people had been added. Now, if you can't afford 2 square meters a day or 3 square meters a day, if you work in a bhatta, and I've done cases that come to me, both as a lawyer and as a judge, it's bonded labor. Loans are given which are unending terms of interest. So they work actually in slavery. The entire family works, they're abused, and their women are at the mercy of the bhatta. And we're talking about hundreds of thousands of people. Isn't that in absence of dignity? You walk, you drive down a street, and you find people begging. Where is the dignity of man? You find transgenders begging. Where is their dignity gone? We don't talk about it. When people are starved of money and they can't send their children to school, or they live in landfills as scavengers hunting for plastic bottles to be recycled, where is the dignity of man? We don't want to talk about it. We want to brush it under the carpet. It's inconvenient. Because those people probably don't even go and vote because they don't even know they can. If you have been watching television the last few weeks, there have been political rallies where people have been paid to come. And you saw women crying with their children. I was promised money and not paid. My husband is in jail, so is my son. And she's crying. Where is her dignity? We don't talk about it. We take it for granted. There are 100 million people of Pakistan. No dignity. Regardless of all the other rights, we just still have no dignity. We have been reduced to subhuman conditions, to a subhuman existence. Where is the dignity of man in Gaza? Where is it? Forced to say that prayers are troubled. Where is the dignity? Why is the world quiet? Where is the Universal Declaration for Human Rights? Some people are not human. 100 million people in Pakistan are not human, and there are people outside the rest of the world who are not human. The unevenness in the power structure, in the economic well-being, the byproduct of that is lost human dignity. If you ignore that and talk about nice little things and academic things, come on, it's hypocrisy. Let's not be hypocritical. Can we more think about enlighten our students on human dignity and human agency, and in the context of gender?
how we have developed so far our jurisprudence in the context of gender, their freedom of violence, their equality between men and women. So, how far we have I understand. Human dignity, another concept of its violation is the, in the household. Which is one obvious thing is domestic violence. The husband beats up his wife. It's not only a violence done, it's not only a crime committed, but she is deprived of her dignity. There's no two ways about it. We don't want to talk about it. It's prevalent not only in Pakistan, all over the world. Why is once historically for millions of years, I think a tragedy is, let me put it this way. The human child needs nurturing. It can't be left alone after 2 months. So it needs nurturing. And the mother has been told to nurture. The father is being the hunter, or the gatherer, not the hunter. So it was that for tens of thousands of years, maybe millions of years, we lived through that stage. When we moved to a civilization, laws were made by men, interpreted by men, jurisprudence was developed by men, and there existed no concept of women being there. When did they were given the right to vote? The 20th century. Or we have the Reformation, the Renaissance, and Voltaire and Rousseau and Aristotle and Socrates, and what about the rights of women? And I want to tell you something that is very shocking. That in jurisprudence, the concept of rape is 100 years old only. Otherwise, it was considered an offense not against the woman, against the father or brother who were disentangled from bride's wife. I'm not saying that read any book in any library published in the West about Turkey. And we are prisoners of our past. We must need to break the shackles and come back to Article 1. It's the dignity of human beings, not of man. Of course, men include women, all that sort of thing. But human beings, I would be more comfortable using that word and finding that word in the Constitution. Any other question? Sir, thank you very much. One important thing which you have already touched upon is the living conditions. And I just want to read for the students that in 2004, the World Health Organization, WHO, and United Nations Children Fund declared that the availability of safe drinking water and hygienic sanitation facilities are a precondition for eradicating poverty, hunger, child deaths, and gender inequality. It is also central to human rights and personal dignity of every woman, man, and child on earth. Oh, yeah, yeah. So how we look to dignity and water and such other living things. You throwing the net too wide. Absolutely correctly. I'm not saying. But let's squeeze it a little further. I gave you the example of a man entitled, a woman entitled to use the toilet in privacy in jail, but otherwise loss of human dignity. Now, of the total population of Pakistan and India, in the villages, where are the toilets? There are no toilets, they have to go into the fields. Or the railway track is a famous building. That is, I mean, let's come down to the basics. I think there's a very Indian movie about it. But it's so obvious. That's human dignity. No one cares. No one. Why bother here or across the eastern frontier or the west? The United Nations is a political organ that does not necessarily reflect
reflects the countries of the world, the governments of the world, not necessarily the people of the world. We've seen it, we're seeing it today. This is another example of the loss of dignity, right? Not caring. Not caring. You see these women, for example, near the canal selling fruit. I remember a TV interview of them. Oh, they're selling strawberries, they're selling cherries. And the TV interviewer asked them, what's your greatest problem? They're not young women. She said, there's no toilet. They're on a living, they feed their family, they stay there for 12 hours. Where's the dignity? On the lighter side of life, till about 2016, 17, there were no separate toilet for female judges in the Supreme Court, except in the jail. We had them built in anticipation of the two Supreme Court judges. But it's again a question of human dignity. For example, there's a child, a woman is working as a suckling child. What is she supposed to do? In the workplace, there has to be a private place for women where they can look after the children, or somebody is there to look after the children, they can feed them. In the High Court, there is a place, I think she is responsible for that. And in the Supreme Court, we have that. But what about the rest of Pakistan? Is the child supposed to starve or the woman supposed to lose her dignity? I'm sorry, I'm talking about real mundane things. But these are the things that matter. Not high-flowing ideas which are all over the place. It is a loss. That's a loss of dignity. You have to fight back. It's not going to happen on this phone. Everything costs money. I'm not going to take it out of my pocket. Yes, it's national. But then the students have few questions. One concern raised by the students was, what about our dignity in context of fair trial, keeping in view the recent incidents in of May and onward, and how can we, being law students, can think of our relations, our political situation, and our right to vote. And these are the things which are currently touching everyone. And what do you think, how it is affecting our dignity? Like even voting and even fair trial, where people can be tried in military courts, or what do you think about it? Start with the military courts. We have a decision now. The first decision, which the military courts were allowed, I was the author of that decision in the first one. But there were two conditions. One, a constitutional amendment was necessary, but that was challenged. Secondly, also written there, I think I wrote it to me, everybody else went for holiday, that if the regular courts are not functioning in the area, only then you can think about it. At that point of time, there were parts of it. Then FATA and KPK, with the flag of Pakistan did not fly. It was immediately of the APS state. Then you could have military courts in that area. But you can't have a military court in Lahore. If this is the military court, and this is the anti-terrorism court, and that's the magistrate's court. That's out of the question. So military justice, like military music, is a contradiction in terms. It doesn't work. The reference to fair trial. Right. But a judge, especially exercising constitutional jurisdiction, should not become a party to making a trial unfair. I have to be very careful. I'm sure you understand what I'm saying.
to make a wrong decision, you can criticize the judge or criticize the judgment. That is acceptable, it's okay. But the judge should not become a party to the making a trial in a subordinate court unfair by sitting on it. You understand what I'm saying without mincing my words. समझ आ रही है मेरी बात? That is what is happening, and that is not acceptable. That's beyond the pale. There cease to be judges. People who do this, despite being very close friends of mine, cease to be judges. If they become a party to making a trial, rather than giving a decision, which can be subject to your criticism. I hope human has dignity, and when we come to the refugees, the Afghan refugees, and in many parts of the world, people claim asylum on based on the human dignity. How we look at it, the Afghan refugees and this whole issue. You see, there are two types of refugees all over the world. One who fear for their life and well-being, and then there are economic refugees who are starving to death, are insecure, can't find living for make a living for their families. And they also. Yes, there is a distinction, but then there is no distinction. And to determine the health of a country, its economic health, its social health, is to look at the number of economic refugees and look at the number of political refugees. Even recently, a boat which capsized off the coast of Greece, 450 people, 600 people there. They were all Asians, maybe some Africans. Was there any Indian there in that list? No. No Indian was there. A lot of Indian migration was legal because of qualified. Which was the largest number of people and families? Which country? Your country. Pakistan. Isn't that enough to show what a mess we are in? People with their wives and children in the basement because they're women with them. And of course, agree. The Coast Guard carelessly allowed it to capsize. I will not say they deliberately capsized it, which may be true also. 700 Pakistanis gone. We have always shown compassion to refugees, economic and wars. You go to Karachi, there's a whole area where the Bengalis, British Pakistan, Bengali speaking. They're from Iran, they're in Karachi. Now they're wanting to go back because of the money that they make is not enough to feed their families back home. And eventually the refugees, if possible, have to leave countries. But you can't force them. You can't be like Nazis forcing them into trucks and sending them to concentration camp or to their death. Can't do that. And we are the people who need the compassion of the world along with this. Why don't you let the students ask questions? Yes. आप बेशक उर्दू में पूछिए। या आप में से कोई जो भी उर्दू में भी बात उर्दू में ये करें जिस जुबान में पूछेंगे उसी में जवाब दें। शर्माना नहीं। So my name is Mohammed from Saturday. Sir, actually we are talking about dignity man and we have seen many examples around the world and Pakistan against dignity man. Sir, actually my question is that how we can protect the dignity man? By fighting for it. And we have many examples against the dignity man. So हम मैंने की dignity किसने प्रोटेक्ट कर सकते और लड़के प्रोटेक्ट करनी रहती है। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स of America, dignity of man is the dignity most obvious is that of the African Americans. Because till recently they were being lynched for entertainment. Police would kill them, right? When we had this Black Lives Matter. It's a political struggle, whether it was Martin Luther King or Malcolm X or others.
It's a political struggle which is not only fought out in courts, but also in the streets. No one will give it to you in a platter. Takh na mile mange, rights are not given. I'm asking for them or begging for you to fight for them. I'm not asking you for armed rebellion, I'm not asking for asserting yourself socially and politically. That coupled, that will eventually result in change in law and protection. Dynamic. Any other one? Yes, Asha, please. Leave it up. Assumption sir, my name is Noor. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा जेंडर और वुमेन राइट्स के रिलेटेड है. एक्चुअली हम अभी मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये देखते हैं कि जो अगर कोई सुपरवाइजर फीमेल है उसको लेस पे किया जाता है मेल से. हालांकि दोनों इक्वल है और कभी इस तरह होता है कि फीमेल ज्यादा सुपरवाइजर होती है और ज्यादा उनसे काम कर रही होती है. उनकी डिग्निटी किधर है? हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर रोल्स आए लेकिन उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है. उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जाती, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि साथ बैठना कोई पसंद नहीं करता उनके. उन पे जो रूल्स में उनकी डिग्निटी किधर है? मैं सोचती हूँ आप इस पे क्या पाएंगे? मेरा तो वही है जो आपका बिल्कुल आप सही कह रही हैं. ये है हकीकत है, ये दाग है हमारे चेहरों पे. ये दाग ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में खवातीन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड होती है. और वो कहते हैं इस हद से ऊपर नहीं जाना. वो कहते हैं ग्लास सीलिंग है, इनविजिबल. बिल्कुल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको जोर लगा के कैन मूव इट अप, यू हैव टू मूव इट अप आल्सो. जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स का है, अभी तुमने जाके चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि इंसान है, उनका अधिकार. और भी आपको बताता हूँ कई मुसीबतें क्या है. हमारे यहाँ बच्चे अबैंडन कर दिए जाते, सारी दुनिया में होता है. दीदी के पास चले जाते हैं. अब उनके जब 18 साल के होते हैं आईडी कार्ड बनाना होगा, बाप का नाम क्या लिखें, नौकरी कैसे करेंगे. उसको सोचा था कि यार अब्दुल्ला लिख देते, तो हर इंसान अब्दुल्ला ही होता. किसी चीज का प्रॉब्लम, हिज डिग्निटी. उसकी क्या गलती है उसको अबैंडन कर दिया किसी ने. अरे फिर वो तो होता है चर्च के फुटस्टेप, गार्बेज हीप पर फेंक देंगे. उनका डिग्निटी है. माइनॉरिटीज को किसी ने बात ही नहीं करी. भाई माइनॉरिटीज की डिग्निटी की जरूरत. लिखने लिखाने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ माइनॉरिटीज आर नॉट ट्रीटेड वेल. और आर दे ट्रीटेड वेल? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको मिसाल देता हूँ समझने. चाहे चीफ जस्टिस हो रहा है कोर्ट, तुम्हारे लॉ में है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए कोटा है. वो करते क्या? वो क्रिश्चियंस के लिए करते क्या है? हमारे यहाँ वो स्वीपर्स भर्ती कर देते, पहले कोटा कंप्लीट हो. वो मैं BA पास है, FA पास है, उसको जो सिविल जज नहीं बना रहा, कम से कम एलबत तो बना दो. मुझे ऑलरेडी कुछ लोग बन गए. सो खबर मिली कि दिस डिस्क्वायर्ड, कुछ लोग जो है वो खबर है. ये भी खबर मिली कि 4-5 सेशन जज मुझे मिलना चाहते हैं, बुला लेते. वो आए हुए थे जुडिशियल अकेडमी में कुछ क्वेश्चंस करने. तो DFID ने स्पॉन्सर किया. DFID इज टू ब्रिटेन व्हाट USA is to like. So before they could say anything, मैंने कहा कैसा रहा कोर्स, बताया. मैंने कहा कहाँ वाला ब्रिटेन से आए थे, कोरिया है. तो मैंने कहा रात को खाना खा दिया, उनको फ्राई जगह ले गया, दोनों के साथ बैठ के खाना खाया. और हम गया फ्राई जगह उनको ओल्ड सिटी दिखे वगैरह वगैरह. ठीक. मैं तो आजकल ये बेचैनी हो रही है, मैंने कुछ ईसाई लोग पढ़ के हाँ जी वो क्योंकि ईसाई होने से आपको कोई इशू नहीं. वो ईसाइयों के साथ बैठ के बड़े शौक से मुझे फख्र से बता रहे कि उनको अपनी ओल्ड सिटी दिखाई है और अंदाज में या कुकुज में बैठ के खाना खाए. हाँ जी बिल्कुल सीधा. क्या प्रॉब्लम? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो कास्ट सिस्टम जो हिंदुओं का था वो कैरी फोर्थ हो. यही है ना. मेरा कि कोई जज तुम्हारा अगर हिंदू है उसके पास ना भेजो, मुसलमान है फिर क्या इशू. फिर उनका सिविल सर्विस में भी है.
वो कई सालों से एक बंदा अपॉइंट नहीं किया, एक पीएसपी ने अपॉइंट किया, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अपनी माइनॉरिटीज का ये याद रखना चाहिए कि ज्यादा मुसलमान माइनॉरिटीज है नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, और कईयों के हम सब के रिश्तेदार है यूरोप में अमेरिका है कि नहीं है, मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार है। अगर हम अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाकी सब चीजें भूलिए, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, फिर ही कह सकते हैं हम अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें। हमें समझिए क्या, जिस मुल्क की तखलीक ही माइनॉरिटी राइट्स हम माइनॉरिटीज हैं, सस्पेक्ट of the majority result हालांकि वो माइनॉरिटीज के राइट्स को हेजिटेट करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या ख्याल है? अनप्लेजेंट थिंग्स, embarrassing things, so true. बस कोई 5 मिनट और है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उमर नसीर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने इशू राइज किए हैं ये तो हमें करने चाहिए थे और उनका जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ मेरा सवाल ये है कि आपने ह्यूमन डिग्निटी पर जो मुकम्मल सेशन किया एज ए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, आपने ह्यूमन डिग्निटी के लिए क्या किया है? कि हम देखते हैं पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस कितने हैं, रोजाना मर्डर होते हैं, किडनैपिंग होती है, 50-50 साल केस के गुजर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, उनके केसेस का फैसला नहीं होता। उनकी डिग्निटी के लिए जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? आपकी जो पहली बात है ना कि मैंने वो सवाल उठाया जो आपको उठाने चाहिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन वही है जो आपका, इधर भी मेरा ओपिनियन वही है जो आपका, पर रीजन तो आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं एक्सक्यूज नहीं कोई दे रहा, एक्सक्यूज का है कोई, अगर बनाया जा सकता है हकीकत के हमारा लीगल सिस्टम स्पेशली प्रोसीजर सिस्टम जो है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए सीपीसी या सीआरपीसी नहीं पढ़ेगा कि वेर भी वाइट बॉक्स को नहीं पढ़ेगा। अगर समझना है तो चार्ल्स डिकेंस को पढ़े। चार्ल्स डिकेंस की 2 किताबों में वो लिटिगेशन का जिक्र है, सीक्रेट पेपर्स में, एक ब्लीक हाउस में। ब्लीक हाउस में है कि 126 साल बाद केस डिसाइड हुआ, जॉर्नलिस्ट। हमारा प्रॉब्लम है कि दुनिया आगे चलेगी, उन्होंने अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया, हम चार्ल्स डिकेंस के लीगल सिस्टम में फंसे। हम अगर बैठ के इन लोगों का काम है अपने लीगल सिस्टम पे प्रोसीजरल लॉ जो एक्सप्लॉइट होता है उसको अगर अपडेट करके मॉडर्नाइज नहीं करते तो यही होगा ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्लैमरस काम नहीं है ना, हमारे प्रोसीड नहीं करता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ करवा होता है ये है, बिल्कुल आप ठीक करें लाखों के से आप फिक्र न करें। इंडिया में भी उनके जो पॉपुलेशन का डिफरेंस देख के उन्होंने जब 2 करोड़ केसेस पहुंच गए थे 5 साल पहले, उनके चीफ जस्टिस साहब ने गुजारा बतार होना शुरू कर दिया। हमारा भी वही हाल है, सिस्टम में बहुत ही बात है, इनको अपडेट करना पड़ेगा। इंग्लैंड में फॉर एग्जाम्पल मुंबई से नकल मारी वुल्फ कमीशन बनाई, 3 साल लगाए उन्होंने इसको बनाने के लिए व्हाइट बुक को। फिर उन्होंने सर्कुलेट किया, फिर उन्होंने फीडबैक लिया, फिर उन्होंने ट्रेन किया अपने जजेस को, ट्रेन किया अपने लॉयर्स को। ये बात कर रहा हूँ मैं 20th सेंचुरी की, 200 साल पहले। फिर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर जब उसमें प्रैक्टिस की गया तो फिर कमियां नजर आई, फिर उन्होंने उसमें तब्दीली की, फिर जाके वो गुजारा हो गया। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, या सब लोग कहते हैं ये होता क्यों नहीं, करते क्यों नहीं आप समझा सिस्टम। अगर आप 1 घंटे में 19 कानून 29 कानून पास कर सकते कोर्ट देखे बजाय, वो इसके लिए क्यों नहीं बनाते कुछ? हुक्म दे देते जल्दी फैसला करो और झटके होने शुरू हो जाते, वो कोई तरीका नहीं है। चेंज द सिस्टम।
4 tier सिस्टम में 3 tier सिस्टम करेगा सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस तरह है नहीं करना चाहिए बाकी मुल्कों में 3 होते हैं जो बाकी कर रहे हैं कोशिश हो रही है तो बहुत स्लो है फिर ही होगा वरना सिर्फ आप और मैं बैठ के कोर्ट से क्या होगा फिर कुछ चीजें जो कोर्ट से बाहर है एग्जेक्टिव का प्रॉब्लम उनके अच्छा एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ लॉ कमीशन ने 1960-70 में कहा था कि एक सिविल जज के पास 350 केस नीचे फिर काम चलेगा I took over as the Chief Justice. Loss of 967 cases हो गए वो कैसे करेगा आप सुना 1200 पे चलेगा तो उसी प्लान ये बनाया था कि वर्कआउट करके 500 पे लिया ये 900 एडिशनल जजेस चाहिए 300 हर साल रिक्रूट करेंगे तो लड़के और बच्चे ले आएंगे बच्चे फिर पैटर्न बनाएंगे किन डिस्ट्रिक्ट में लिटिगेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे वहाँ उनको भेजेंगे ट्रेन करके और वो जो 10 महीने हमारे पास जुडिशियल अकेडमी में रहते हैं वो ज़ाया नहीं करेंगे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाएंगे जजमेंट कैसे लिखते हैं और कैसे और पैसे कितने लगने थे 3-4 अरब रुपए जो पंजाब के बजट में कुछ भी नहीं तो पढ़ा हुआ है करते कुछ ग्लैमरस काम नहीं है ना ये आप करना ना अब आपकी बारी मैं जो करना था करिए Assalamualaikum, sir. My name is Mohammed Salman. Sir, lately I've been studying about many former judges of Supreme Court. And I came across you as well before even announcement of this discussion. So, sir, आपके पूरे career में, like even before you have been appointed as a judge of the High Court, तो sir हर इंसान के ज़हन में कुछ aims और objectives होते हैं कि if I would be a judge, so मैं ये करूँगा. And then उसके बाद फिर आप पॉइंट हो भी गए और ये जो लीगल एक सिस्टम है आपने पूरी ब्रांच है स्टेट की तो you have been through the very bottom to the very top because you also have been acted as a chief justice of Pakistan. Sir, acting chief justice you have been so very top तक सर गए ना so very top तक top है तो उसके बाद तो सर रिटायरमेंट होगी तो सर what do you think that to what extent that aims and objective you have in your mind before the pursuance of this judge career and उसके बाद रिटायरमेंट के बाद do you have any like kind of regret that I अगर मैं आज होता तो मैं ये चीजें रिलिंक्विश कर देता या अपनी इन जजमेंट्स को ना करता मेरे पता क्या पूछ लो बता देता हूँ मुझे सवाल किसी किस्म के सवाल के जवाब में हिचकिचाहट नहीं यार कोई एम और ऑब्जेक्टिव लेके कि वो सफेद घोड़े पे बैठ के तलवार निकाल के पूजा कर कुछ लोगों का होता मेरा ये आज मैं तो डे टू डे ये काम वकालत करनी होती जज बन गया मुझे पूछे बगैर मुझे जज नहीं एक और ना भी करते कि काम है मैंने काम करना है तो कल आगे करना है तनख्वाह जस्टिफाई करनी है ज़्यादा करना का तो ठीक और क्योंकि सिस्टम खराब है तेरी साहब रिसेंटली फोर्थ में मैंने उनसे कहा था बिल्कुल भी जज रहे हो फैंटास्टिक में ये वो बैठे हुए थे मेरे पास वो ये सिस्टम बहुत खराब है बहुत कमजोर है उसने तो है पर अपना काम तो करो ना उसको एलिबाई के तौर पे इस्तेमाल ना करो काम ना करने ये दूसरा रिग्रेट्स की बात अपनी अगर मैं ये कहूँ ह्यूमन बीइंग को रिग्रेट नहीं है लाइफ में एलिबल्स मेरी है लेकिन सारी पर्सनल प्रोफेशनली जजमेंट्स दैट हैव रिटन आई हैव नो रिग्रेट व्हाटसोएवर रिग्रेट इस तरह किया गया शुड स्पेंड मोर टाइम विद चिल्ड्रन गॉड शुरू कर देनी चाहिए जजमेंट्स के हवाले से कोई रिग्रेट नहीं क्योंकि जब कानून के मुताबिक और हकायक के मुताबिक फैसला करना था दाएं बाएं देखे बगैर मैंने फैसला किया रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस
ये इसका मतलब नहीं कि आप उससे भी करें या उससे भी, तो आपका राइट है। मैंने जो किया तो मुझे समझ आया, कर दो काम ठीक है। ये कि आप हमारी सारी जर्नी से भी आगे नेक्स्ट जो हमारी जर्नी होगी उसमें से गुजर के आप स्टेज पे आए, फिर रिटायर हुए, तो आपके भी मतलब वही उसके वाला थोड़ा क्वेश्चन है कि आपके एम थे, ऑब्जेक्टिव्स थे कि इस तरह से सर हाँ बोलो, स्टेज पे लाकर बोल रहे हैं। तो सर आपने अपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स देख, जैसे आप ह्यूमन डिग्निटी पे आप काम करना चाह रहे, तो आप हमारे वाली स्टेज से स्टार्ट करते हो, तो आप कैसे करते हैं, वो अपने टिप्स और ट्रिक्स दें कि जो हमें आगे काम आएंगे। असल में 2-3 चीजें आपको बतानी, वो ह्यूमनिटी को साइड पे रखते, बड़ी बात है। एक ये है कि नेवर मिस योर क्लासेस। तो आपकी क्लासेस होती है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लॉ कॉलेज ओवर कैंपस एक ओपन हॉस्टल था, मैं दिल्ली से आया था और क्लासेस मिस नहीं करता, ऐसे नहीं पढ़ता। दुनिया में और काम बड़े होते जमाने में करने वाले, ठीक बट इफ यू अटेंड ऑल योर क्लासेस, लेकिन क्लास में सोना नहीं, हैव एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप विद योर टीचर। सवाल पूछे, वो सवाल पूछे, जवाब देने की कोशिश करें, गलत सवाल जवाब भी दे दे, ना देने से बहुत बेहतर होता, खुशी है तो सच निकल आता है, आपका हिस्सा बन जाए। दैट्स टीचर। अगर आपने फिर विषय आखिरी पर पढ़ के ठीक हो जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम आपको क्या है, एनुअल में एक लेकिन क्लास नहीं मिस करनी, बिल्कुल वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर बुनियाद रखनी। और फरवरी को 7:30 शुरू होती है, 10:30 खत्म हो जाती। You understand? रियलिस्टिक रहना चाहिए, जमीन पे प्लान रख के चलना चाहिए, क्लाउड्स पे। बड़े हो गए ना, स्कूल के बच्चे तो क्लास ही मिस करना, बाकी जो मर्जी करें, ठीक है। तो आपने पनामा जजमेंट में एक पहले जजमेंट की, हाँ, और मेरी नजर में वो एक शाहकार थी। इसमें आपने लिखा कि ये सिस्टम के खिलाफ होगा अगर पहले से फैसला सुना दिया जाए, अगर अपील के सारे मौके ज़ाय कर दिए जाए, और वो जो कॉन्सेप्ट है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। उसका मतलब सर अच्छा, अगली जजमेंट जो थी वो उससे मैं बताता हूँ, तो सर आपकी बात समझ लो, तो नहीं भी पूछा आपने, मैं बताता हूँ। जब ये केस चल रहा था, उसके दौरान आया कानून केस, हार्ट फेल हो गया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, तो बहुत से कर, और फिर मुझे अच्छा, मुझे भी पूछे क्या हुआ, मतलब को चल रहा गया था, बेइज्जत हो गया वापस। उसके बाद कम से कम 4 से 6 हफ्ते रेस्ट, मुझे 2 हफ्ते लगे, फिर बातें हुई। 2 हफ्ते बाद मैं चीफ जस्टिस एंड माय प्राइम मिनिस्टर, इसमें मसला क्या है, सवाल अंडरस्टैंड कर जाए तो याद कराते हैं। 2 जजेस ने कहा था कि तकरीरों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए डिस्क्वालीफाई कर ये है मेरा ये ख्याल था, बाकी 2-3 करेगा कि किसी सियासी आदमी को तकरीरें करने को डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो सारा दिन तकरीर हो। दूसरा ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वर्ल्ड रीजन, तो लीगल क्वेश्चन होना चाहिए, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। देयर मस्ट बी लीगल क्वेश्चन टू से द ट्रूथ, नॉट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी। पार्लियामेंट में पॉलिटिकल नेसेसिटी, और ये लिखा उसमें तो असल इशू झगड़ा क्या था कि एक प्रॉपर्टी एलिजिबली कोई ज्यादा है जो डिस्क्लोज नहीं की गई कमीशन पेपर्स। एक अलग क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी किसी की है, उनका सोर्स ऑफ डिस्क्लोज वो एक अलग चीज है, ठीक। पहला वाला जो होता है डिस्क्लोज है, वो रोज इलेक्शन पिटीशन हजारों मैंने की लॉयर की उनको कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो गया डिस्क्लोज नहीं करते तो पेपर रिजेक्ट हो जाते, बाद लग जाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते।
एक जज साहब ने इलेक्शन हमने उनको दूसरे आदमी ने आगे कहा कि एफआईआर इमीडिएटली इसको, तो वो मेरी बीवी के डिपेंडेंट्स में, बीवी के नाम मेरे ताल्लुकात खराब है, तलाक नहीं कर, लेकिन तलाक तो नहीं हुई, मैं उसको पेपर रिजेक्ट हो, कोई अनोखी चीज नहीं। इस केस में जो जायज प्रॉपर्टी पे अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो, नाजायज प्रॉपर्टी हो तो लैब का केस होता है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरी जजमेंट सिर्फ ये है, और 8-8-10 जजमेंट रिपोर्ट करके रहेंगे, अगर जय की बताए रिपोर्ट आएगी, अगर कुछ काबिल हुई तो हम भेज देंगे, लैब को जाएंगे, उसकी वजह रिपोर्ट आई थी, बहुत सारी चीजें थी तो लेकिन एक चीज जो है यूएई में तो ये है कि जो पाकिस्तानी और ओवरसीज इमिग्रेंट्स होते हैं उनको तनख्वाह नहीं होती, कमाई हुआ कौन, उन्होंने क्या किया कि आपने डायरेक्टली तनख्वाह नहीं देगी, ये हमें ये इंस्टीट्यूशन है, उसमें अकाउंट खुलेगा, आप अकाउंट में डिपॉजिट करें हाजिर जो है, और वहां से वो चेक निकाल देंगे, वो अकाउंट कॉपीज ले आए, सर्टिफाइड कॉपीज उसमें अकाउंट था, उसमें नवाज शरीफ साहब के नाम पैसे थे, ठीक, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बैंक अकाउंट नॉट बीइंग डिस्क्लोज। स्टेज क्या होता है, ये जो आज पूरा एक्सप्लेनेशन दिया तुमने बताया, उसके 10 एक्सप्लेनेशन उस जजमेंट में जो लिखा भी है, उन्होंने उनके वकीलों ने एक्सप्लेनेशन दी ने कि अब ये फैसला करें कि गलत है या सही है, तो बेनिफिट उठाते हैं। ख्वाजा आसिफ कभी काबिल नहीं, उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ था अपने कम्युनिकेशन के पास, लेकिन वो कुछ नहीं कहा, दिस इज इट, वो करते वो छोड़ दें, तो जजमेंट पड़े बगैर करते, ये हुआ है। आप इसके बाद कोई चॉइस थी, तीनों कहा तो अल्लाह जानता है, वैसे नहीं कह रहे कि एक्सप्लेनेशन आई, दिस इज व्हाट आपकी ये रिव्यू है, अब कम से कम क्लियर हो गया तो ये होगी कोई मिस उसमें है, तो मैं क्या करूं, एक जो आप अपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो दिखा हुआ है, और ड्यू प्रोसेस क्या है, पूछा एक्सप्लेनेशन दे दो, उसके वकीलों से पूछा है, सवाल करके कोर्ट में, वो को आंखें बंद कर रहे थे, तो 184 थी जैसे रिच जुरिसडिक्शन है, उसको कोई पावर जुरिसडिक्शन है, एक्सरसाइज की वो ड्यू प्रोसेस में सजा दे रहे, वो लैब चल रही है, एवन फील्ड है और मेटल है और भी वो लैब जाने हो जाएगा, क्या वो ठीक तरह प्रोसिक्यूट हुए, नहीं हुआ प्रोसिक्यूट, बुनियाद में भी हम लैब को प्रोसिक्यूटर भी हो, इन्होंने एंगेज किया सरकारी साहब और भी काउंसिल केस लड़ने का भी तरीका क्या बताओ, इस तरह बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल केसेस आते हैं, लेकिन इसमें दो जगह दो वाले गुंजाइश कोई खुदकुशी कर रहे तो क्या किया जाए, अगर आप पढ़े 4 से एग्जैक्टली और कुछ नहीं लिखते, कुछ बातें भी जो पूछना पूछ लो। सर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में लिखा हुआ कि अदलिया आजाद है, ये बस यही पूछना था, क्या आजाद है? जवाब सुनने की हिम्मत है, जी जी सर, है हिम्मत जी, रिकॉर्ड तो नहीं कर छोड़ो मैं चाहता हूँ 4 years
I've never done this with any people. I won't say no to them. Sir, thank you. I समझ क्योंकि इसलिए नहीं जगह लग रहा था कभी कुछ टीचर्स वाले कई घंटे लगे उसमें बहुत मजा आता है वो नहीं ऐसा कुछ be realistic just don't be please be realistic don't be critical be a part of the solution not part of the problem किनारे पे बैठ के बिना दृष्टि कैसे चला रहा है उसमें बड़ा आसान तक करता है कोई भी चलन मारेगा Sir, thank you very much. Thank you, sir. This was a very thought-provoking session. Thank you for enhancing our capabilities with your wisdom and precious time. Now, I would request Madam Justice Retired Nasser Javed Iqbal to present a thank you note to our guest. कि मेरे मजबूर करने पे आते हैं कि तशरीफ लाए और आप सबको उन बातों से आगाही की जो हमें पता ही नहीं थी, मैं भी नहीं थी जानती। तो आज मेरी भी आंखें खुल गई कि हमारे यहाँ होता क्या है। तो ये सब कुछ आपके लिए एक सीखने का मौका और ये देखना है जैसे इन्होंने सीखा कि हम अब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम की तरफ नहीं है। प्रॉब्लम का वक्त तो गुजर गया, तो कभी न कभी उसका सोल्यूशन भी तो इंशाल्लाह निकलेगा और इंशाल्लाह अच्छा ही निकलेगा। जो भी हम करेंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। दोबारा बहुत आपका शुक्रिया।